right, so we're quickly recapping work, power, and energy formulas. Okay, so firstly, we discussed work done formula yesterday, which was force in the direction of the work done times distance covered. Now, if you were finding the work done by the driving force, then the force we'd use in the formula would be the driving force. That is the force moving the object forward. And if we were to find work done by the resisting force, then you would use the force of resistance here in the formula. And then we discussed that the units for work done is joules. Then we discussed change in kinetic energy, delta KE, which is half m v square if v is greater than u, minus half m u square. If v is bigger, you write v first. If u is bigger, you write u first. And this can be written like this as well, half m outside the bracket and then v square minus u square if v is bigger than u. Or if u is bigger, then you have to write the u term first. And the units for energy are also joules. Okay. Then we had discussed the potential energy, change in potential energy. That is also mg height 1 minus mg height 2 if height 1 is greater than height 2, which can be also written as mg bracket h1 minus h2. And if h2 is bigger, then you write the bigger height first and the smaller height later, if h2 is bigger than h1. Units here are also joules. So joules for kinetic energy change, joules for potential energy change. Then we had discussed the formula for power. There are two formulas to find power. One is force times velocity, or there's work done over time taken. And the unit for power is watts. Then we had discussed the formula for conservation of power, work and energy. That was work done by driving force plus loss in energy is equals to work done by resisting force plus gain in energy. Okay. These were all the formulas we had discussed yesterday. Now let's start applying them. Okay, so I'm copying question number 2 of the worksheet. 1 कल कर लिया था. Okay, here's question number 2, which says that a car of mass 1250 kg travels along a horizontal straight road with increasing speed. The power provided by the car's engine
is constant and equals to 24 kilowatts. Okay. So we know that there's a horizontal surface and there's a car with a mass of 1250 kgs and there's a driving force, power provided by the car engine that would be moving this forward. Now we need the force that is moving the car forward and we're given the power. So the formula for power is driving force into velocity, force into velocity. So it's going to be the driving force in this question. Okay. So make driving force the subject. That would be power upon velocity. And it's going to be 24,000 over V. Because it says 24 kilowatts. So that's why we write 24,000 upon V. So the forward force or the driving force. Whenever the question are related to a vehicle, whenever a question is related to vehicle, then the driving force is the forward force because there's a force being exerted by the engine. So now forward force in such questions is usually referred as driving force. Okay. I'll tell you. So that would be 24,000 upon V. Okay. That is the forward force. The resistance to the car motion is constant and is equals to 600 newtons. Okay. So the car is moving in the direction of the driving force and there's a resisting force which is 600 newtons. Show that the speed of the car cannot exceed 40 newtons. Sorry, 40 meters per second. In part 1, you have to find maximum speed. Yesterday, we had discussed that when an object is traveling at its maximum speed, this is the max speed. And this is a speed time graph. So when an object is traveling at maximum speed, that means the speed is constant in this region, which means acceleration is 0. Acceleration is equals to 0 as speed is constant for this time. So while the car is traveling at its maximum speed, you can say that for the time being, the speed is constant. So acceleration is 0. So at maximum speed, acceleration is equals to 0. So forward force is equals to backward force. So the driving force is equals to the resisting force. So 24,000 upon V is equals to 600. Make V the subject. V equals to 24,000 upon 600. So that's equals to 40 meters per second. So we have shown that when the speed is maximum, then the highest speed cannot be more than 40. कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ज्यादातर नहीं मिस। में ना पावर ही गिवन होगी, स्टार्ट वो पावर से ही करेंगे, वो आपको पावर देंगे क्वेश्चन में और आपने सबसे पहले यही फॉर्मूला बनाना होगा कि ड्राइविंग फोर्स जो है वो पावर अपॉन वी है और वो आपकी फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स हो जाएगी, ए के ए फॉरवर्ड फोर्स। ठीक है, पावर अपॉन वी करने से आपके पास ड्राइविंग फोर्स आएगी। ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट द इंस्टेंट व्हेन स्पीड इज इक्वल्स टू 15। तो ठीक है, कर लेते हैं। अब एक्सेलरेशन आ गई है क्वेश्चन में,
तो अब फॉर्मूला चेंज होगा, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। फॉरवर्ड फोर्स हमारी ड्राइविंग फोर्स है, बैकवर्ड फोर्स हमारी रेजिस्टिंग फोर्स है, इज इक्वल्स टू एम ए। ड्राइविंग फोर्स है 24,000 अपॉन वी माइनस रेजिस्टिंग फोर्स है 600 इज इक्वल्स टू मास है 1250 kgs और एक्सेलरेशन इज ए। v की वैल्यू बता दी गई है 15, तो यहाँ 15 सब्स्टिट्यूट कर लिया और जो भी आंसर आएगा उसको 250 से डिवाइड कर लें, 1250 से डिवाइड कर लें। So 24,000 divided by 15 minus 600 is 1,000. And then that divided by 1250 gives 0.8. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो। क्वेश्चन 3 करते हैं। A car of mass 1200 kg travels along a horizontal straight road. The power of the car engine is 20,000 watts. The resistance to the car motion is 400. Okay. So if it's moving in this direction, then you have driving force in this direction and resisting force in this direction, which is 400. अब ड्राइविंग फोर्स नहीं दी, उसकी जगह पावर दी है, तो अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इज इक्वल्स टू ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी या स्पीड। सो 20,000 डिवाइडेड बाय दिस v इज इक्वल्स टू ड्राइविंग फोर्स। तो हमारी फॉरवर्ड फोर्स आ गई 20,000 divided by v. Find the speed of the car at the instant when the acceleration is 0. Sorry, acceleration is 0.5. तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। फॉरवर्ड फोर्स है हमारी ड्राइविंग फोर्स, बैकवर्ड फोर्स है हमारी रेजिस्टिंग फोर्स, इक्वल्स एम ए। 20,000 अपॉन वी माइनस 400 is equals to 1200 times 0.5. Now make v the subject here. We have 20,000 upon v equals, यहाँ आ गया 600 plus 400,000 आ गया. So now you divide 1,000 and 20,000 and you get 20 meters per second. That's part 1. कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज खुद ही अनम्यूट करके पूछ लेना अगर कुछ भी ना समझ आए तो। मिस कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू मी अगेन कि हम लोग पहले स्टेप में ये पावर वाला फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं जब उसने हमें 20 किलोवाट ऑलरेडी दिया हुआ है। क्योंकि हमें फोर्स चाहिए होती ना, फॉरवर्ड फोर्स,
माइनस बैकवर्ड फोर्स। पावर फोर्स तो नहीं होती, लेकिन पावर से आप फोर्स निकाल सकते हो फ्रॉम दिस फॉर्मूला। अगर पावर को स्पीड से डिवाइड कर दिया जाए तो फोर्स आ जाती है। तो जो गिवन ओके। पावर होती है उसको आप स्पीड से डिवाइड करोगे, दैट विल बी योर फॉरवर्ड फोर्स। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। सो यू नीड द फॉरवर्ड फोर्स, और क्वेश्चंस में आपको पावर गिवन होती है, तो आप पावर डिवाइडेड बाय वी करते हो तो फॉरवर्ड फोर्स आती है। ऑलराइट, थैंक यू। पार्ट टू, show that the maximum speed of the car is 50। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, कि अगर मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि इन दैट इंस्टेंट एक्सेलरेशन इज जीरो। ये हो गई मैक्सिमम स्पीड, और इसको हम कांस्टेंट स्पीड कह सकते हैं इन दैट रीजन। तो इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन, इस पे एक्सेलरेशन जीरो। तो फिर फॉर्मूला हो गया फॉरवर्ड फोर्स इक्वल्स बैकवर्ड फोर्स। फॉरवर्ड फोर्स हो गया 20,000 अपॉन वी, बैकवर्ड फोर्स हो गई 400, इससे वी निकाल लेंगे 550 meters per second। दिस इज व्हाट वी हैव टू शो, कि मैक्सिमम स्पीड 50 meters per second है और मैक्सिमम स्पीड पे एक्सेलरेशन जीरो होती है, सो फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू बैकवर्ड फोर्स। ओके, नेक्स्ट इज work done by the car's engine as the car travels from A to B is this। So, अब हमें ये क्या गिवन है इस स्टेटमेंट, वर्क वर्क डन बाय डन। ड्राइविंग फोर्स। यस, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स गिवन। ठीक है, दिस इज वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, और एफ डी कह लो ड्राइविंग फोर्स। Given that the car is traveling at the maximum possible speed between A and B, find the time taken to travel from A to B। चलिए, टाइम टेकन आ गया। टाइम का हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, वो है पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर टाइम। ये फॉर्मूला हमें तो यूज कर लें। ठीक है, तो फ्रॉम दिस चैप्टर वी ओनली नो वन फॉर्मूला जिसमें टाइम आता है, दैट इज पावर is equals to work done upon time। So time will be work done upon power। वर्क डन बताया गया है 15 kJ, तो 1500 kJ, so 1500 and then another 1000 joules divided by power। क्वेश्चन के शुरू में बताई हुई है 20 kilowatts, so 20 and then 1000। Now simplify this, this will give you time in seconds, it gives you 75 seconds। कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज पूछो। Then we move forward।
car of mass 1200 kg travels along the horizontal straight road. Okay, so there's a horizontal straight road, a car of mass 1200 kgs moving on it. The power provided by the car engine is constant with the power is equals to 20 kilowatt. So a kilowatt, so again power is equals to force into speed. So force or the driving force is equals to power upon V. So 20,000 upon V is the driving force. That's the driving force. The resistance to the car motion is constant and equals to 500 newtons. That's drawn here. The car passes through points A and B with a speed of 10 meters per second and 25 meters per second. So yeah, there's a point A over here where speed is 10. And there's a point B over here where the new speed is 25 meters per second. The car takes 30.5 seconds to travel from A to B. Okay. So the time taken in this region is 30.5 seconds. Okay. Find the acceleration of the car at A. अच्छा, अब एक कॉमन गलती होती है स्टूडेंट्स से इन क्वेश्चंस में, वो ये है कि वो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक u है 10, एक हमारे पास v है 25, एक t है 30.5, तो वो ना ये यूज कर लेते हैं। a कैसे आएगा, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से a आ जाएगा? v इज इक्वल्स टू u प्लस at से, ठीक है, बट ये नहीं यूज हो सकता इन फॉर्मूलाज में। जब भी वर्क, पावर, एनर्जी का क्वेश्चन है, उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस नहीं यूज होती। उसकी वजह ये है कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन का टॉपिक है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन एज्यूम करता है। So all those formulas that you use for equations of motion, v is equals to u plus at, v square is equals to u square plus 2s, उनमें थ्रू आउट एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जब मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूलाज लिखवाए थे ये, तो मैंने साथ बताया था कि ये खाली तब अप्लाई होते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तकरीबन पिछले सारे टॉपिक्स में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती थी और हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ही यूज किया। अब क्योंकि कार इंजन की बात आ गई है, तो whenever you're traveling from one spot to another spot in a car, आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो नहीं जाते। एक्सेलरेशन तो हर इंस्टेंट पे चेंज होती रहती। So now you can't use equations of motions anymore. So that's why do not end up using v is equals to u plus at in this question to find acceleration. ठीक है, आपने वर्क, पावर, एनर्जी के ही फॉर्मूलाज यूज करने। So equations of motions are only used when the acceleration is constant. That is not the case in work, power, and energy questions. अब उन्होंने कहा है ए पे एक्सेलरेशन निकालें, जस्ट एट ए। So let's look at A. A पे हमें पता है U10 है। So at A हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स is equals to MA. Forward force is the driving force, 20,000 upon V.
minus backward force is 500 newtons is equals to m is 1200 and acceleration is what we have to find. और क्योंकि acceleration at a का हुआ है तो हम इस u की जगह 10 यूज करेंगे. So then we get 2000 minus 500 divided by 1200 equals to a. मिस मिस लेकिन हमें ये U10 दिया हुआ है और मिस ये तो 20,000 रुपीज V है. नहीं नहीं, ये स्पीड ही होता है. ठीक है, फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू फोर्स, ड्राइविंग फोर्स इनटू ये स्पीड होती है. तो जिस टाइम की पावर की बात होगी उसी इंस्टेंट पे आप स्पीड यूज करोगे. ठीक है, तो ये यू ठीक भी है. हो सकती है, वी भी हो सकती है. बस जिस इंस्टेंट की बात हो रही है उसी इंस्टेंट की स्पीड यूज करनी. ओके, इसका आंसर आता है 1.25. So acceleration comes out to be 1.25. A is equals to 1.25 meters per second. Next part is by considering work and energy, find the distance AB. By considering work and energy, अब ये कौन से फॉर्मूला की बात हो रही है? वर्क और एनर्जी के कंजर्वेशन का फॉर्मूला. वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स प्लस लॉस इन एनर्जी is equals to work done by resisting force plus gain in energy. Do we know the work done by driving force? अभी नहीं पता, उसको अभी छोड़ देते हैं. कहीं क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली नहीं गिवन वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स. ठीक है, लेट्स होल्ड दैट. ओके, प्लस लॉस इन एनर्जी. अब ये जब ये ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है तो क्या काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है कि क्या पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है? वो वाली एनर्जी हम इधर लिखेंगे लॉस इन एनर्जी में. तो कौन सी एनर्जी लूज हो रही है? Kinetic. काइनेटिक लूज हो रही है. हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? From going to by going from A to B, how is kinetic energy decreasing? Kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है? Kinetic energy is half mv square, half times mass times speed square. तो A पे बड़ी होगी kinetic energy या B पे बड़ी होगी kinetic energy? That's B with a B पे. speed of 25, हाँ, and A has a speed of 10. तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं हो रही, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है. क्योंकि पहले स्पीड 10 है और फिर स्पीड 25 हो रही है. तो काइनेटिक एनर्जी का ना गेन है. तो अब मैं लिख रही हूँ गेन इन काइनेटिक एनर्जी. इसके साथ मैं लिख रही हूँ के ई. ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड पे हम लिखेंगे पहले वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स लिखेंगे और उसके साथ प्लस लिखेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी विच इज गोइंग टू बी, आई एम गोइंग टू राइट इट एज डेल्टा के ई is equals to half m bigger speed which is v in this case minus smaller speed which is u in this case.
So half times m is 1200 times the bigger speed, which is 25 squared, minus the smaller speed, which is 10 squared. Okay. Acha. Let's talk about potential energy now. When the object is moving from A to B, क्या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी? क्या होगी? जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज ही होगी, ज्यादातर तो नहीं होता है क्वेश्चन पर, लेकिन कभी कभी दोनों एनर्जीज इंक्रीज हो रही होती हैं और दोनों ही डिक्रीज हो रही होती हैं. सो अब लुक एट द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी. इज इट इंक्रीजिंग या इज इट डिक्रीजिंग? और पोटेंशियल एनर्जी होता क्या था? हाइट रिलेटेड होती थी. जितनी जिस पॉइंट की हाइट हायर है, ये सेम नहीं है? हाँ सेम रहेगी क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है. तो फिर डेल्टा पीई तो जीरो है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं. क्योंकि जो हम करेंगे ना एम जी एच सेकेंड हाइट माइनस फर्स्ट हाइट, तो ये तो जीरो है क्योंकि हाइट में चेंज ही नहीं आ रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है. सो पोटेंशियल एनर्जी का ना गेन है ना लॉस है, तो वो हम कहीं भी नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये लॉस इन का एनर्जी के साथ जीरो आ गया. कोई एनर्जी नहीं लूज हो रही, ना काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है क्योंकि वो तो गेन हो रही है, और ना ही पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है क्योंकि वो तो चेंज ही नहीं हो रही. सो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज तो जीरो है. ठीक है. अब आ गया वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स. वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स में हमें नहीं गिवन वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स. कभी कभी क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होता है वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स, तो इसका मतलब है कि नाउ वी हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन. इधर कर लेते हैं. वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स, क्या है वर्क डन का फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्टेंस, और ये फोर्स जो होगी ना ये रेजिस्टिंग फोर्स होगी. अगर वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स की बात हो रही होती तो हम ड्राइविंग फोर्स इनटू डी करते, बट यहाँ रेजिस्टिंग फोर्स की बात हो रही है. सो वी यूज रेजिस्टिंग फोर्स विच इज 500 न्यूटन, वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो 500 डी हो जाएगा ये, और वही डी हमने फाइंड करना है. सो इक्वल्स टू 500 डी, द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस टाइम्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट फोर्स. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स की जगह लिख रही हूँ 500 डी. ओके. अब रह गया वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स. ओके. अब देखो क्वेश्चन में टाइम भी गिवन है, तो टाइम का भी हमें एक ही फॉर्मूला पता है, विच इज पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स. वो हमें इधर चाहिए, देखो ये अब हम फाइंड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो देन वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स वुड बी पावर इनटू टाइम टेकन. सो पावर है हमारे पास 20 किलोवाट्स, सो 20,000, और टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन है 30.5 सेकेंड्स. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ड्राइविंग फोर्स आ जाएगी. सो 20,000 इंटू 30.5, 610,000. So work done by driving force आ रही है 610,000.
तो अब हम इसकी जगह लिख लेंगे 610,000. ठीक है. Now I'm rewriting everything. Work done by driving force आ गया 61,610,000 प्लस लॉस इन एनर्जी है ही नहीं सिस्टम में, 0 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स है 500D प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी है हाफ टाइम्स 200 टाइम्स 25 स्क्वायर minus 10 square. So this becomes 61,000, sorry, 610,000 is equals to 500D plus 0.5 into 1200, ये 200 नहीं है 1200 times bracket 25 square minus 10 square, ये आता है 315,000. 61,000 minus 315,000 divided by 500, 590 आगे. So the distance between A and B is 590. So I'm going to leave you guys with a few questions from the worksheet. तो वो करके आने हैं, ताकि जब खुद करोगे क्वेश्चन स्क्रैच से तभी ज्यादा क्लैरिटी आएगी और तभी समझ आएगा कि टॉपिक समझ आया या नहीं. वही शुरू के जो 4 फॉर्मूलाज हैं वही अप्लाई होंगे हर क्वेश्चन में. So please do the homework I give you today. Or abhi I'm ending this class and I'm sending you a new link to discuss the problems from the pure paper. अगर किसी का पेपर नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो they can text me and they don't have to come. So, okay, I'm ending this lesson now.